Well, hello and welcome to the Major Dhyan Stadium, also known as the National Stadium in New Delhi. And we welcome you here for a grand event, the torch relay for the Asian Games 2018. Well, New Delhi also has a very special place in the history of the Asian Games because in 1951, the first ever Asian Games were held right here in New Delhi. New Delhi hosted the second Asian Games in 1982, and that is when India was on the center stage of sports. Not just hockey, but over multiple events that India featured as the crowning glory for its sporting legacy. This year, 2018, it'll be Indonesia which takes the credit of hosting the Asian Games. And for the first time ever in the history of the Games, the hosts will be two cities, Jakarta and Palembang. We'll be going and giving you action as the best athletes of India go across, and India welcomes the torch. It's over to the major event inside the National Games. स्वागत आप सभी का राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, जहां पर 18वें एशियाई खेलों की टॉर्च रिले का प्रमुख समारोह आयोजित किया जा रहा है और यहां पर कुछ ही क्षणों के पश्चात समारोह की शुरुआत होगी। एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर राजधानी दिल्ली के लिए। 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ भारत में, उसके बाद 1982 में 9वें एशियाई खेल हमारे देश में आयोजित हुए और परंपरागत तौर पर चूंकि भारत ने एशियाई खेलों की शुरुआत की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए एशियाई खेलों की जो टॉर्च रिले है उसकी शुरुआत आज हो रही है। ऐतिहासिक इंडिया गेट पर भी टॉर्च रिले का आयोजन होगा और वहां पर एथलीट पहुंचेंगे। दिल्ली का ऐतिहासिक स्थल इंडिया गेट, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद टॉर्च रिले की शुरुआत होगी। सबसे पहले आगाज होगा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से, जिसे पहले इरविन एम्फीथिएटर भी कहा जाता था। 1933 में शुरुआत हुई थी। हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद की मूर्ति, जो कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीते 1928 से, जिसकी शुरुआत हुई। 1980 में मॉस्को में अंतिम स्वर्ण पदक भारत ने जीता था ओलंपिक खेलों में। एशियाई खेलों में भी भारत हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता रहा है और इंचियोन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। जकार्ता और पालेमबांग 2 शहर हैं जहां पर 18वें एशियाई खेलों का आयोजन होगा। What these performers have in store for us this morning.
Right, ladies and gentlemen, let's bestow a round of applause to these performers. It's a form of Balinese dance that we've just seen. And, well, I'm sure I don't need to describe it, the Vanar dance, so to speak, with the chuck sounds being taken out by the dancers as they perform. No need for separate music when you can take the beats out yourself. Ladies and gentlemen, it's a momentous day for us because we are marking the lighting of the torch for the torch relay of the 18th Asian Games that is going to get underway from the 18th of August. We have some very esteemed guests here with us. And without further ado, I'd like to invite those guests on stage this morning for the lighting of that torch. First and foremost, ladies and gentlemen, I'll request the President of the Indian Olympic Association, Dr. Narendra Dhruv Batra, to kindly come up on stage along with Mr. Rajiv Mehta while we have some very esteemed guests here with us. Sir, I would request you to kindly also please come up on stage. And with you, may I request Mr. Eric Thohir, the President of the Indonesian Asian Games Organizing Committee and also the President of the Indonesian National Olympic Committee as well, the man who's been instrumental
in putting everything in place to make the games happen in Indonesia. And of course, for those of you who might not know, his love for football is absolutely unparalleled. Just look it up, and I'm sure you'll know what I'm talking about. Inter Milan will draw some reference. Ladies and gentlemen, may I also invite on stage Mr. Rahul Bhatnagar. Please, sir, may we have you up on stage. The Secretary, Sports, Government of India. Pleasure to have you here with us. May I also welcome on stage Ms. Neelam Kapoor, the Director General of Sports Authority of India. And of course, we have the honor of having two lifetime Vice Presidents of the Olympic Council of Asia. Please put your hands together for Mr. Wee Ji Chong and Raja Randhir Singh Ji as I invite them up on stage. It's indeed an honor to have such an esteemed company here with us this morning, and a perfect start to this Sunday morning. May I request our esteemed guests to kindly be seated, please. And first and foremost, Dr. Batra, sir, may I request you to kindly say a few words. A very good morning to distinguished guests, members of the Olympic Council of Asia, Indonesian Organizing Committee, Secretary Sports, Director General Sports, my colleagues from Indian Olympic Association, athletes and members of press and media. Today we are here not just to mark the beginning of the 18th Asian Games, Jakarta, Palembang 2018, but also to commemorate the momentous occasion when the first Asian Games opened at this hallowed venue in the year 1951. The first Asiad marked a then infant India's ambition to execute an event of such a grand scale. At the heart of this entire movement was to bring the finest, grandest sporting event in the unified Asian continent. Today, 67 years later, the 18th edition of this quadrennial sporting showpiece begins its journey from where it all started. My heartfelt gratitude to all of you present here in making this moment a memorable one. Thank you all for being with us today, and let's make this occasion special. And thank you to Indonesia for hosting this event in Indonesia for the continent. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Batra, sir. Ladies and gentlemen, special Sunday indeed. And at this point of time, may I invite on stage Mr. Erick Thohir, the President of the Indonesian Asian Games Organizing Committee, and also the National Olympic Committee of Indonesia as well. Good morning, Your Excellency Mr. Wei, Honorary Life Vice President of OCA, Raja Nandir Singh, Honorary Life President of OCA, Mr. Rahul Bhatnagar, Secretary Sport Government of India, Dr. Narinder Dhruv Batra, President of Indian Olympic Associations, Mr. Rajiv Mehta, Secretary General Indian Olympic Associations, Mrs. Neelam Kapoor, Director General, Sport Authority of India, Excellency, the Ambassador of Indonesia for India, Mr. Siddhartho Reza Suardiputro, athletes and officials and the people of India, good morning. Cheer up, come on, good morning. And also, I would like to thank you all the team that has been traveling for Indonesia. I think please stand up. And also it's an honor for me to have Olympic gold medalist for badminton, Susi Susanti over here also, who are the torch ambassador. It is a great honor to join flame lighting ceremonial right here in New Delhi.
Major Dhyan National Stadium, which is a very historic stadium, I believe. A place where the permanent flame of the Asian Games and the place where the first games took place. Indonesia was once more given a chance to host the Asian Games. Will be our second time hosting the Asian Games since 1962. And we are deeply honored for this incredible opportunity from OCA and the trust from the members. It is now close 1 month before the Games time, and on behalf of Indonesia Asian Games Organization in ASGO, I assure you with the confidence that Indonesia is going to host a successful Asian Games in 2018 for the pride of our country, and also we want to be a good host for our delegates and members who are by today, we are registering almost 16,920 athletes official. I think this will be the record ever for Asian Games attendance. Today will become a very historical moment where we'll be lead up the torch of the Asian Games. The torch will then be transferred to internal flames in Merapen, Central Java by a dedicated Indonesian Air Force. Thank you. And will be fused and internal flame, and the national relay start within the 18,000 kilometer relay. Will involve our national athletes, 1,000 torch barriers through 18 provinces with 54 historical cities in Indonesia. The relay will finish on August 17, the Independent Days of Indonesia in the National Museum of Jakarta, before carry out the opening ceremonies at Gelora Bung Karno Stadium the next day. I sincerely hope that the torch event could become a symbol of Asia's spirit and the most important of Asia unity. This will be a great momentum to all of us to spread the Asian Games spirit all across Asian countries. This is why our slogan that we choose, Energy of Asia, for the Asian Games in Indonesia. Ladies and gentlemen, may I take this opportunity to thank you all the warm welcome and the hospitality that you've given to us. Thank you. Looking forward to have you in Indonesia. Thank you so much, sir, for those inspiring words. Yes, of course, the energy of Asia and the fact that sport becomes a platform where it unites one and all. And then, of course, you try and give your best on the sporting arena in the middle of sporting action. Ladies and gentlemen, of course, as we just heard from Mr. Eric Thohir, we'll have 1,000 Indonesian sports athletes and sports persons who will be taking part in that torch relay in Indonesia across those 18 provinces and 54 odd cities. We'll have 30 of India's best as well here this morning to start off that Asian Games torch relay, and I will be introducing them to you in just a little while from now. Once again, just highlighting the fact that sport becomes that platform where they all come together and say, we are one. And then, of course, let the best man or woman win in the competitive arena. At this point, ladies and gentlemen, may I also invite on stage for a quick, to the podium for a quick word, Mr. Wee Ji Zhong, who is the Honorary Life Vice President of OCSR. May we have a few words from you, please? Respected Mr. Raul Pennaskar, Secretary of Sport, representing India government. Dear Mr. Eric Thohir, President of INASCOC. Dear Dr. Narendra Patra, President of India Olympic Association. My very dear colleague, Mr. Raja Randir Singh, Honorary IOC members, and the Live Vice President of OCA. My dear colleague from OCA, from EOA, IOA, and from INASCOC.
distinguished guests, dear athlete, friends, and media people. On behalf of His Highness Sheikh Ahmed Al Sabah, President of the OCA, it gives me great pleasure to welcome you all to New Delhi for this sacred occasion. New Delhi holds a special place in our heart because it was the host city of our first Asian Games in 1951, the Olympia of Asia. As we prepare to host the 18th Asian Games in Jakarta and Palembang, Indonesia next month, we salute the pioneer and the visionaries who wrote the first chapter in our incredible success story. Since then, the Asian Games has become the second largest international multi-sport event in the world, just after the Summer Olympic Games. And this year, we will welcome a record number of athletes to Indonesia, almost 11,000. From my travels and the discussion around the sport world, I can assure you that the Asian Games are respected and admired by the other 4 continental associations and by the global Olympic movement. We have built the path for others to follow, and we have displayed the power of sport to unite and embrace our athletes from all corners of the continent. As the Asian Games had grown over decades, we will never forget our role here in New Delhi. This is where it all began, and this is why we will continue to come back to New Delhi every 4 years to start another Asian Game and celebrate this spirit of friendship and solidarity. It is a time to look back from the pride on those early days, and a time to look forward with confidence and optimism to the bright future of the Olympic movement in Asia. The passion for the Asian Games was ignited here in New Delhi 6-7 years ago, and burns stronger year by year, decade by decade. In Jakarta and Palembang, we will witness the energy of Asia and another memorable Asian Game. Thank you. Thank you so much, sir. We're definitely hoping for a memorable edition of the 18th Asian Games that will get underway from the 18th of August. At this point of time,
may I invite to the podium Mr. Rahul Bhatnagar, the Secretary Sports, Government of India, to kindly come up. You can hear a cheer, ladies and gentlemen, and I can let you know that in a little while you'll see some of the best that Indian sport has had to offer in recent times right here at the stadium. But for the moment, it's Mr. Bhatnagar with a few words, please. Honorary Life President of the Olympic Council of Asia, Mr. Y. Ji Jong and Shri Randhir Singh, His Excellency Ambassador of Indonesia to India, Mr. Siddhartho Suryadipuro, President of the Asian Organizing Committee for the Asian Games, Mr. Eric Tohir, President of the Indian Olympic Association, Dr. Narendra Batra, Director General Sports Authority of India, Mrs. Neelam Kapoor, Secretary General of the Indian Olympic Association, Mr. Rajiv Mehta, our honored guests from Indonesia, officials, athletes, sportspersons, members of the media and friends. A very good morning to you. First of all, on behalf of Government of India, I would extend a very warm welcome to our guests from Indonesia. We are really happy to have them here at the commencement of the torch relay. This is a very proud moment for all of us here. The torch relay, as you know, for the 18th Asian Games in Jakarta and Palembang will commence from this stadium, the National Stadium, which is also called the Major Dhyan National Stadium. And as you know, it was in this stadium in 1951 that India had the honor of hosting the first Asian Games. And we are very proud of the fact that every Asian Games, the torch relay commences from this stadium. Since the first Asian Games, the Asian Games torch has traveled to many countries and to many cities of Asia, spreading the message of friendship, unity, brotherhood, sportsmanship among the youth of Asia and the world. We in Government of India, we in India, and I guess in the entire world, we cherish and celebrate the noble ideals of the Olympic movement. And India stands firmly committed to these ideals and the values they promote for qualities of the body, will, and the mind. We strongly believe that there is no better medium than sports to inculcate and foster the feeling of friendship and solidarity among the people of the world. We are sure that the 18th Asian Games in Indonesia will strengthen and promote these ideals and also provide a stage to the youth of Asia to achieve excellence in every sport. Last of all, I'd like to give my best wishes to the organizing committee of the Asian Games, to all those in Indonesia who will be associated with the organization of these Games, for a superb and very successful 18th Asian Games. Thank you. Thank you so much, Mr. Bhatnagar, sir, for those kind words. How this event has grown from 51 onwards to now 2018. I remember reading about it, 11 countries, Dr. Batra, but the number has grown substantially, hasn't it? Sorry, I'm coming again. I just wanted, I think the press would be very much interested in this. The number of athletes and officials who will be participating in this Asian Games in Jakarta and Palembang will be 16,920. That's the biggest ever contingent in any sporting event. So you should be proud that Asia as a unified continent and Indonesia as good hosts are going to be hosting 16,920 athletes and officials. Thank you, Indonesia. Thank you, President. And I also want to convey my thanks to His Excellency Sheikh Al Sabah, who could not make it today, but for his excellent support and guidance in building up the sports in Asia. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Batra, sir. Ladies and gentlemen, it's time for us to begin the protocol to light the torch, and before that is done, I would like to introduce to you the torch ambassador for the 18th edition of the Asian Games that gets underway in Indonesia, and none other
Then the Olympic champ back in 1992, who went on to become world champ in 1993, followed it up with another Olympic medal, albeit a bronze in 1996. Please put your hands together for Susi Susanti, ladies and gentlemen, one of the most decorated sportspersons from Indonesia, and she's done her country proud in badminton. No better than her to be the torch ambassador for the Asian Games torch relay. Pleasure to have you here with us, ma'am. And ladies and gentlemen, now to move on and get on with the protocol of lighting of the torch, may I request the torch be please brought up on stage. Mr. Mehta, I'd request you to receive that torch, please. Sir, I'll hold the papers if you want. I'd request Dr. Narendra Dhruv Batra to join in for the lighting of the torch as well. Ladies and gentlemen, a symbolic moment for the 18th Asian Games with the lighting of the torch, ladies and gentlemen, done by Dr. Narendra Dhruv Batra and Mr. Rajiv Mehta, sir. And now I'd request that this particular torch gets handed over to the man in question, Mr. Eric Thohir, who's the president of the Indonesian Asian Games Organizing Committee, who's there with him. Of course, ladies and gentlemen, there's a sequence that we will follow from here. I'd request the president, okay, since we've got them in this order now, I'd request it to be handed over to Mr. Bhatnagar and Ms. Kapoor. Susie, ma'am. And now, of course, to the lifetime vice presidents of the Olympic Council of Asia, Mr. Jisong and Raja Randir Singh. And before it gets handed over, Rajaji, could you hold on to that torch for a minute? Sir, I'd request you, Mr. Eric, to kindly move across and take the torch one more time. Could you take the torch, sir? I'd request you to hold the torch and hand it over to the torch ambassador, please. Susi Susanti, ladies and gentlemen, who is the torch ambassador for the 18th edition of the Asian Games in Indonesia. And now, all of you who are cheering, I would request you to put your hands together loud and clear for the very first Indian athlete who will be the first runner among the 30 who will be running with this Asian Games torch, the 5-time world champion who won an Olympic bronze in 2012, Asian Games gold medalist, recently crowned Commonwealth Games gold medalist as well, the one and only supermom, Mary Kom, ladies and gentlemen, one among the 30 who will be running with this Asian Games torch. Mary, it's great to have you here with us. And ladies and gentlemen, with that, we commence this torch relay. There are 30 athletes who will be running, 30 Indian athletes who will be running, and of course the torch will run towards your left, Mary. Go well. Right, Mary, you'll have to run and we'll have 30 Indian athletes, so all the best, go well. There she goes. Ladies and gentlemen, Mary Kom will be handing over the torch as it goes along in its run to Srijesh, who's down on the route. PR Srijesh, the Indian men's hockey team goalkeeper. Of course, he's captained the side as well in the past. A man who's held fort in the citadel under the bar will be the next runner after Mary Kom. We also have in that list Jitu Rai, Swati, Sarita. So it's a whole lot of numbers that we'll be talking about. I would like to, in the meantime, thank our special guests, our esteemed guests, for joining us on stage. So I'd request you to kindly take your seats in the stands, the VIP stands. Thank you so much. एशियाई खेलों की ज्योति दिल्ली के
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विधिवत रूप से प्रज्वलित हो चुकी है और टॉर्च रिले का आगाज़ हो चुका है। भारत की जानी मानी एथलीट मुक्केबाज MC मैरी कॉम जो टॉर्च रिले को लेकर के सबसे पहले आगे निकली हैं। दादा ध्यानचंद की मूर्ति भारतीय हॉकी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने लगातार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। आप देख रहे हैं PR श्रीजेश को, जो कुछ ही क्षणों के उपरांत MC मैरी कॉम से टॉर्च रिले को ग्रहण करेंगे। एशियाई खेलों में, ओलंपिक खेलों में एक गौरवशाली परंपरा है। MC मैरी कॉम PR श्रीजेश को ये ज्योति सौंपते हुए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है एशियाई खेलों के लिहाज से, जिनका आयोजन इंडोनेशिया में जकार्ता और पलम्बांग में होना है। 2 शहरों में पहली बार एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे। 17 अगस्त को ये ज्योति पहुंचेगी। इंडोनेशिया का स्वाधीनता दिवस होता है और 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इन खेलों का आयोजन होगा। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, 2014 के इंचियन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के प्रमुख स्तंभ। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक भारतीय टीम ने अभी हाल ही में हासिल किया। और MC मैरी कॉम 5 बार की विश्व चैंपियन, लगातार 6 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दुनिया की पहली एथलीट। पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तमाम उपलब्धियां उनके नाम दर्ज हैं। और ये दोनों भारत के गौरवशाली यशस्वी एथलीट इस समय टॉर्च रिले के साथ। PR श्रीजेश अब इस ज्योति को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एथलीटों का एक लंबा सिलसिला है जो गौरवान्वित महसूस करेंगे देश के तमाम एथलीटों के साथ इस टॉर्च रिले के साथ। There's no dispute to the stature that PR Srijesh has as far as Indian sport is concerned. He's been India's goalkeeper, the knight in shining armor in India's goal, and nonetheless the captain of one of the most successful sporting teams of the country. As far as the Asian Games is concerned, India has a total of 139 gold medals to its credit, 178 silver medals, 299 bronze, and 616 medals in total over the 17 Asian Games which have been held. And right here at this historic moment in New Delhi's National Stadium, which is also known as the Major Dhyanchand Stadium. That's a perfect view from the India Gate side as the National Stadium opens up to the center of New Delhi, India's capital. And well, of course, the Indian hockey team has always been the hope for maintaining its standards at the highest levels. Maintaining even a silver medal is considered to be, you know, something short of expectations. And the duel in the finals have always been India and Pakistan, and this man knows all that it takes to keep that gold medal shining new year after year. And the baton now is being moved over to Jeetu Rai, the shooter. And not just is he a shooter, he's the army man who really took the baton after the current Minister of Sport for the Government of India, Major Rajvardhan Singh Rathore, who won India's first individual silver medal back in Athens. And there's a lot of hope from the shooters right now, because they have been hitting bullseye one after the other. And after hockey, Shivendra, correct me, this is one sport, and also badminton, that has really been India's stake to winning a medal at the international level at the highest order. बिल्कुल सही सुजय कहा आपने। राष्ट्रमंडल खेलों में या एशियाई खेलों में या इवन ओलंपिक खेलों में और विश्व कप में, विश्व चैंपियनशिप में निशानेबाज हमेशा ही पदकों पर भारतीय खिलाड़ी निशाने लगाते रहे हैं। जीतू राय उन्हीं की श्रृंखला में एक स्वर्णिम कड़ी उन्हें कहा जा सकता है। 10 मीटर और 50 मीटर एयर पिस्टल के नामचीन निशानेबाज हैं जीतू राय। 1987 में जन्मे, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। 2017 में दिल्ली में विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
2014 में मॉरिबोर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और अब स्वाति, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं और मध्य प्रदेश से आती हैं, स्वाति गोलकीपर का दायित्व निभाती हैं। तो भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने कुछ देर पहले इस टॉर्च रिले को संभाला था और उसके बाद स्वाति, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं, उन्होंने इसे ग्रहण किया है। बहुत ही अहम अवसर। और यहाँ मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, देशभक्ति से परिपूर्ण ये कार्यक्रम, जिसका आनंद लेते हुए स्टेडियम में मौजूद दर्शक और एशियाई खेलों की टॉर्च रिले जो कि प्रज्वलित की गई कुछ ही समय पूर्व, वो इस समय इंडिया गेट का जो हेक्सागन है उसकी ओर अग्रसर होते हुए इंडोनेशिया से भी बहुत से एथलीट, अधिकारी और खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया मेज़बान है 18वें एशियाई खेलों का। स्वाति भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर इस समय एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के, टॉर्च रिले को लेकर के आगे बढ़ते हुए, हाल ही में कोरिया में भारत ने टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली थी कोरियाई महिला हॉकी टीम के साथ, जिसमें स्वाति ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और वहीं से दरअसल उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई थी। सही अर्थों में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। Yeah, the torch relay just crossing the National Gallery for Modern Art, which is called the inner circle of the India Gate and is the epicenter of any tourist destination and is the cynosure for people who really are curators of modern art. Very soon you'll be seeing in action Laishram Sarita Devi, the boxer from Manipur, who's not only the national champion, for also the former world champion in the lightweight class. In 2009, the government of India recognized her efforts in the boxing arena and awarded her the Arjuna Award. एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के इस समय आगे बढ़ते हुए लैश्राम सरिता देवी मणिपुर से आती हैं, जहां से खेलों का जो माहौल है वो ख़ास तौर पर जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उसके बाद से एक बल मिला है। 1982 में जन्मी सरिता देवी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है मुक्केबाजी में। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने रजत पदक जीता था। एशियाई खेलों में इंचियन में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। विश्व चैंपियनशिप में 2006 में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हर एक एथलीट के लिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन खेलों से जुड़ा है उसके लिए एक गौरव का अवसर। और अब दिनेश कबड्डी टीम के सदस्य रहे हैं, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। 1961 में जन्मे दिनेश भारतीय कबड्डी खिलाड़ी इस समय 18वें एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए। Yeah, Shivendra, the Kabaddi team is also recognized as one of the major sources for medals. They've not been beaten till now as far as the Asian Games is concerned, and their unbeaten record is unparalleled. And definitely the Pro Kabaddi League, which is happening in India now, is also another churner for more international star, and Dinesh is leading the pack currently, as India will be taking on its next contingent from these games, which will be held from around August to September from 2018. And like I told you earlier, this is the first time in Asian Games history that two cities will be jointly hosting the Asian Games, the capital Jakarta along with Paningam. The torch moving across the circle of the India Gate, crossing over the Bandara Road, which is another landmark of renowned stature. That's where the UPSC building and
The other government buildings are hosted, and right in the center of this is the India Gate, around which there is this lush green lawns, and also the Children's Park, which is a huge destination for people not just in Delhi who come across for boating, who come across for recreation and having some quality time with their family. The Asian Games, of course, had its beginning right here in New Delhi back in 1951 and hosted again the Asian Games in 1982, brought on a series of revolution. The first time that color television was brought at such a massive scale to India was thanks to the 1982 Asian Games. एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के इस समय आगे बढ़ते हुए गुरप्रीत सिंह, भारतीय निशानेबाजी को जिन्होंने नया आयाम दिया है, जिन खिलाड़ियों ने, उनमें जीतू राय के साथ गुरप्रीत का भी नाम दिया जा सकता है। 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जिन्होंने जीते थे, एक कांस्य पदक भी हासिल किया था। बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो कि आज इस एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ने का जिन्हें गौरव प्राप्त हो रहा है। और जैसा पहले हमने कहा, किसी भी एथलीट के लिए जो इन खेलों से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके लिए यकीनन एक अविस्मरणीय अवसर है। 18वें एशियाई खेल जिनकी शुरुआत 18 अगस्त को होगी इंडोनेशिया में, इस बार 16,920 एथलीट इन एशियाई खेलों में भाग ले रहे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 18 अगस्त से 2 सितंबर 45 देश, 40 खेल, 462 स्पर्धाएं, जहां पर खिलाड़ी पदकों में अपनी दावेदारी पदकों के लिए पेश करते हुए नजर आएंगे। इंडोनेशिया में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा है। 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, और संयोग की बात है कि 1962 में फुटबॉल में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी एशियाई खेलों में। उसके बाद से हालांकि एशियाई स्तर पर भारत का ग्राफ फुटबॉल में थोड़ा नीचे जाता रहा है, लेकिन इंडोनेशिया में अन्य खेलों के साथ साथ इस बार कुछ नए खेलों को भी शामिल किया जा रहा है। जैसा अक्सर जो इस तरीके की स्पर्धाएं, इस तरीके के आयोजन होते हैं, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल या ओलंपिक खेल, उनमें अक्सर देखने को मिलता है एथलीट एक के बाद एक एशियाई खेलों की इस ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए। संदीप बयाला जो कि जूडो के खिलाड़ी रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों की ज्योति जो आगे बढ़ रही है, उसके रास्ते को, उसको सफर को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक हम सभी देख सकते हैं व्यवस्थित रूप से चल रहा है इंडिया गेट राउंड अबाउट पर, जहां लगातार वाहनों का आवागमन जारी रहता है। आज हालांकि रविवार है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सुचारू व्यवस्था इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए। Well, Shivendra, it's also a matter when you're mentioning the Delhi police. Sandeep Bayala happens to be an ACP, Additional Commissioner for Police, with the Delhi police, and he was part of the Indian contingent at the Barcelona Games in 1992. And the Delhi police has also been surging forward to have its name among the sports icons of the country. Some of them also are Sudesh Kumar, who participated in the 1968 Mexico Olympics, while ACP Premnath was a part of the Indian contingent in the 1972 Munich Games. Both were wrestlers. Definitely the showstopper was the lady who took the torch from the very first go as far as India was concerned, MC Mary Kom.
and the torch run continues right across the circular road around the India Gate in New Delhi. अजय सिंह भारोत्तोलक, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है और ख़ास तौर पर जूनियर स्तर पर एशियाई स्तर की प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इस समय 18वें एशियाई खेलों की ज्योति जो कुछ ही समय पहले दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रज्वलित की गई, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जिसे लेकर के आगे बढ़ी थी MC मैरी कॉम, उसके बाद PR श्रीजेश को उन्होंने सौंपा। जीतू राय जो कि भारत के जाने माने निशानेबाज रहे हैं, इस ज्योति को लेकर के आगे बढ़े। स्वाति भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य, उसके बाद लैशराम सरिता देवी, दिनेश भारत के कबड्डी खिलाड़ी, गुरप्रीत भारत के निशानेबाज, संदीप बयाला जूडो के खिलाड़ी और अब अजय सिंह भारोत्तोलक भारत के, जिनके हाथों में ये ज्योति प्रज्वलित होती हुई इंडिया गेट के राउंड अबाउट पर हम सभी देख सकते हैं कि एक डेडिकेटेड 2 लेन्स हैं जिसमें एथलीट इस ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे एथलीटों का काफिला है। सुरक्षाकर्मी काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं इस ओलंपिक ज्योति को ध्यान में रखते हुए। और इधर राष्ट्रीय स्टेडियम पर युवा एथलीटों का, युवा खिलाड़ियों का एक हुजूम जो यहाँ पर एकत्रित हुआ है इस टॉर्च रिले का हिस्सा बनने के लिए। वे सभी इस रिले में भाग लेने के लिए रवाना हो रहे हैं उत्साह उमंग के साथ। निर्धारित रास्ते पर एथलीट्स के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के नक्शे कदम पर चलने की तमन्ना अपने दिलों में लिए हुए ये युवा एथलीट, जिनमें काफ़ी संख्या में ट्रेनी एथलीट्स भी शामिल हैं। और अब हम आ चुके हैं मुख्य रास्ते पर जहां पर भारतीय एथलीट ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। One of the other sports which is dominating on the Asian scenario is that of Wushu. There is Pooja Dhyan, and that's the long shot as the torch relay enters into the India Gate premises. Both sides are lush green lawns, which really are a sight for this, and that on the far side is the Rashtrapati Bhavan, and this, Shivendra, is the Rajpath, the majestic Rajpath, which hosts the Republic Day parade. पूजा कादियान से अब ये ज्योति पहुंची है देबोरा हेराल्ड के पास, और देबोरा हेराल्ड जो कि भारतीय साइकिलिंग की पर्याय कही जाती हैं, उनके पास से अब ये ज्योति पहुंच चुकी है। भारतीय टेबल टेनिस के दैदीप्यमान नक्षत्र कहे जाने वाले अचिंत शरद कमल के पास, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। 2006 के मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों को कौन भूल सकता है, जब अचिंत शरद कमल के नेतृत्व में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। और ऐतिहासिक इंडिया गेट पर इस ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए अचिंत शरद कमल। 18वें एशियाई खेल 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया में आयोजित किए जाएंगे। भारत 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी करने में कामयाब हुआ था। उसके बाद 1982 में 9वें एशियाई खेलों का भारत में आयोजन हुआ था, और जो एक परमानेंट फ्लेम है एशियाई खेलों की, वो दिल्ली में ही मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में अवस्थित है। और ये वो इंडिया गेट के ठीक सामने स्थल है जहां पर एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी। सभी एथलीट और खिलाड़ी जहां पर एकत्रित होंगे। हम देख सकते हैं पूजा कादियान, जिन्होंने कुछ देर पहले फ्लेम को अपने हाथ में लिया था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, उनके साथ में इंडोनेशिया ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष एरिक थोहिरार मौजूद हैं। साथ में अन्य एथलीट अचिंत शरद कमल इस समय अपने हाथों में लिए हुए
एशियाई खेलों की इस ज्योति को, जिसे आज प्रज्वलित किया गया समारोह में। तमाम नामचीन भारतीय एथलीट यहाँ पर उपस्थित, मनिका बत्रा को देखा जा सकता है। एथलीट खड़े हैं उनके ठीक बाईं ओर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता, साथ में एशियाई खेलों के आयोजन समिति के अध्यक्ष एरिक थोहिर, अचंत शरद कमल अपने हाथों में लिए हुए इस ज्योति को। Well, yes, also you can see in the front row, the gentleman with the cap is the former Indian captain of the hockey team, Sardar Singh, in fact known as Sardar Singh, happens to celebrate his birthday today. He turns 31 and born in Sant Nagar, Sirsa, Haryana. This 5 feet 9 inch has been a mountain of muscle and has also been named as one of the best midfielders in world hockey. He has got has represented India at more than 300 occasions and scored 16 goals for India. The silver medal at the Commonwealth Games in Delhi, the silver medal in the 2014 Commonwealth Games, Asian Games, the Asia Cup 2007, 2017 gold medal winner, Asian Games 2014 Incheon team winner, and that was the gold medal, and had to settle for the 2010 bronze medal in Guangzhou. The World's Champions Trophy at Breda, he was the captain in 2000 when he went over to help India bag the silver medal. There's so much said about Achantya Sharat Kamal, the paddler who's got the golden wrist of steering India to the medals podium, and backing him also, you'd mentioned Manika Batra, part of the women's contingent which made the first team gold medal at the recently concluded Commonwealth Games. एशियाई खेलों का कारवां जो कि 1951 में दिल्ली से शुरू हुआ, 1982 में दोबारा से दिल्ली पहुंचा और अब ये कारवां पहुंच रहा है इंडोनेशिया में, जहां पहली बार 2 शहरों में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा, जकार्ता और पालेम्बांग में। और इन एशियाई खेलों की ज्योति आज राजधानी दिल्ली में प्रज्वलित की गई मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। इस समय सरदार सिंह भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी, जैसा सुजय ने बताया, आज अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो उनके लिए एक दोहरी खुशी का अवसर है कि वो एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय टीम एशियाई खेलों में हमेशा से ही पदक की दावेदार रही है। हालांकि हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया, मलेशिया और परंपरागत तौर पर पाकिस्तान से भारत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। सरदार सिंह दुनिया भर में हॉकी खेल चुके हैं। विश्व स्तर पर शायद ही कोई ऐसा मकाम रहा होगा जो उन्होंने हॉकी में हासिल नहीं किया। ओलंपिक पदक हालांकि भारत ने 1980 में आखिरी बार मॉस्को में जीता था स्वर्ण पदक के रूप में। वासुदेवन भास्करन जब भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे। ओलंपिक में पदक की ज़रूर भारत को तलाश है, और अगर किसी भारतीय हॉकी खिलाड़ी से जिक्र किया जाए तो सबसे पहले उसी का ख्याल आता है। और यकीनन सरदार सिंह, जो कि भारतीय हॉकी की कमान इस समय संभाले हुए हैं, PR श्रीजेश, SV सुनील जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ, उनके दिल में भी तमन्ना होगी कि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक खेल हैं और उनसे पहले कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाले एशियाई खेल, उसमें इस कामयाबी के सिलसिले को दोहराया जाए। 2014 में इंचियन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ नेदरलैंड्स में ब्रेडा में, जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। और अब सरदार सिंह ने ज्योति सौंप दी है समरेश जंग को, जो कि 2006 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुने गए थे,
जिन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल हासिल किए थे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ जुड़े रहे हैं। समरेश जंग भारत के जाने माने निशानेबाज। समरेश जंग और निशानेबाजी का बड़ा पुराना रिश्ता है। इस समय एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए समरेश। भारतीय निशानेबाजों ने 2002 के मैनचेस्टर जो राष्ट्रमंडल खेल थे तब से अपनी स्वर्णिम यात्रा की शुरुआत की थी और ये बदस्तूर जारी है। हालांकि हाल ही में खबरें ये भी आई हैं कि अगले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी को शायद शामिल न किया जाए। उसको लेकर के काफ़ी चिंता है भारतीय खेल परिदृश्य में, उसकी ओर प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय एक गौरवशाली गौरवपूर्ण अवसर है समरेश जंग के लिए, जो कि 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भी इस टॉर्च रिले की ऐतिहासिक यात्रा के सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं। उन एथलीटों में शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की टॉर्च रिले का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया था। टॉर्च रिले का ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट इस टॉर्च रिले को लेकर के, ज्योति को लेकर के आगे बढ़े हैं। और अब किरण पाल राणा, भारत के वॉलीबॉल खिलाड़ी, जिनको ये ज्योति सौंपी गई है। एशियाई खेलों की ज्योति जिसे आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रज्वलित किया गया विधिवत तौर पर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता, केंद्रीय खेल सचिव राहुल भटनागर, भारतीय खेल प्राधिकरण की महासचिव श्रीमती नीलम कपूर, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के महासचिव रहे राजा रणधीर सिंह, और ये हैं वो युवा एथलीट जो कि आज की इस टॉर्च रिले का हिस्सा बन के स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये एथलीट, युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग भागों से आज रविवार की सुबह पहुंचे हैं मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पर। पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर इसी बीच एशियाई खेलों की ज्योति आगे बढ़ती हुई। From what we can see here is none other than Anup Kumar, who's known as Captain Cool. And on the Kabaddi field, he's also earned the nickname of Bonus Ka Badshah. Comes in from Palra, Haryana, and has been representing India at the Kabaddi for many years. The 2016 Kabaddi World Cup gold medalist, the 2010 Guangzhou Asian Games gold medalist, the 2014 Incheon gold medalist for Team India. Anup Kumar is one of the renowned captains of the Indian national team, and as far as the Pro Kabaddi League is concerned, plays for the Jaipur Pink Panthers. He has a stunning move, which after 5 years, he's moved over as one of the most recognizable faces. He's also employed as a Deputy Commissioner of Police in his native state of Haryana and has over 400 points in the Pro League. Anup Kumar comes in from the Gurgaon district of Haryana, and he joined the CRPF at a very cool rate, and his exploits took him to the India camp for the first time in December 2005 and has represented India for the first time at the South Asian Games in Sri Lanka in the year 2006. His international debut happened to be
at the 2014 Asian Games and then of course also the gold medal at the 2010 Asian Games. At the South Asian Games, he's also the captain and for the record third Kabaddi World Cup in 2016. Let's also hope that Anup Kumar continues to take Indians' Kabaddi baton longer, higher and stronger, as in August later this year they will be coming on with another opportunity to take his gold medal tally to the whopping hat-trick mark. अठारहवें एशियाई खेलों की ज्योति आज विधिवत तौर पर राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रज्वलित की गई। पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं इंडिया गेट और ये सभी युवा एथलीट अलग अलग स्पर्धाओं में जो भाग लेते हैं, देश का नाम रोशन करने की तमन्ना लिए आज इस टॉर्च रिले का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में ये सभी एथलीट प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ रहे हैं इस टॉर्च रिले के साथ, जिसे भारतीय एथलीटों में आज सबसे पहले ग्रहण किया एमसी मैरी कॉम ने, कि 5 बार की विश्व चैंपियन है और 6 बार विश्व चैंपियनशिप्स में पदक जीतने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी हैं। उसके बाद तमाम नामचीन भारतीय ग्रहण किया है और इस समय जिसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं भारतीय सरदार सिंह के साथ टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। एसवी सुनील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रोशन किया है, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियाई खेल हो या ओलंपिक खेल हो, और बहुत युवा यंग एज से ही उन्होंने हॉकी खेलने की शुरुआत कर दी थी। 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे जब भारत ने रजत पदक हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया से भारत को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भी एसवी सुनील भारतीय हॉकी टीम के साथ थे। ऐतिहासिक इंडिया गेट, जहां पर कुछ देर पहले सभी एथलीट एकत्रित हुए थे जो कि इस ओलंपिक ज्योति को लेकर के, एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेगा इवेंट्स में एक गौरवशाली परंपरा है टॉर्च रिले की, जिससे जुड़ करके हर एथलीट अपने आप को खुशकिस्मत मानता है। एसवी सुनील कुछ देर पहले जिस ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही खास अवसर। मनोज भारतीय मुक्केबाज इस समय एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है इंडिया गेट के राउंड अबाउट पर। हम पृष्ठभूमि में देख सकते हैं डेबोरा हेराल्ड, जो कि भारतीय साइकिलिंग की पर्याय कही जा सकती हैं। उनके ठीक पीछे एसवी सुनील हैं जो कुछ देर पहले एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। इस समय ज्योति ज़रूर उनके साथ नहीं है, लेकिन उसको वो पूरे उत्साह उमंग के साथ फॉलो कर रहे हैं। अन्य एथलीटों के साथ सुचारू व्यवस्था की गई है इस टॉर्च रिले के आयोजन को ध्यान में रखते हुए। एक के बाद एक भारतीय एथलीटों से होकर के गुजर रही है ये ज्योति, जो अंततः इंडोनेशिया पहुंचेगी 2 दिन के उपरांत। उसके बाद इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर टॉर्च रिले का आयोजन होगा। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वाधीनता दिवस है और तब इस टॉर्च रिले का समापन होगा और 18 अगस्त को 18वें एशियाई खेलों की विधिवत शुरुआत होगी। परवीन निशा भारत की खो खो खिलाड़ी, इस समय ओलंपिक आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली इस
एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए। खो खो कबड्डी के साथ भारत का परंपरागत खेल है और भारत की खो खो खिलाड़ी परवीन निशा इस समय एशियाई खेलों की इस ज्योति को लेकर के सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ते हुए। उनके बाद बारी है गौरव सोलंकी की, जो कि भारत के भविष्य की आशा के मुक्केबाज कहे जा सकते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है खेलों से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। एशियाई खेलों की ये ज्योति जिसका आगाज हुआ आज यात्रा का मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से। सबसे पहले जिसे थामा था मनिका, जिसे थामा गया था एमसी मैरी कॉम के द्वारा, और मनिका बत्रा की याद आना स्वाभाविक है क्योंकि कुछ ही समय के पश्चात वे दृष्टिगोचर होंगी जिन्होंने हाल ही में गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का गौरव बढ़ाया है। टेबल टेनिस में अचिंत शरद कमल ने आज इस ज्योति को ग्रहण किया और अब मनिका बत्रा देश का गौरव, युवा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा एथलीट, ट्रेनीज आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में उपस्थित हैं और मनिका बत्रा इस समय एशियाई खेलों की ज्योति को लेकर के आगे बढ़ते हुए अविस्मरणीय सफलता अर्जित की है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में हाल ही में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। Yes, of course, Monica Batra is synonymous with the youth and the current generation of players as the torch enters the National Stadium once again. That's the grand days. And there is the Citizens Run, which involves the youth and the population of Delhi, which is invited to take part in this run. Huge numbers of students from schools and colleges, and there is the table tennis shake hand grip style player Monica Batra. Many people seem to have that question, how tall is she? She stands around 6 feet 1 inch in height, and she won the silver medal in the under-21 at the Chile Open and represented India at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, where she finished quarter-finalist, as well as the 2014 Games. She won 3 medals at the 2015 Commonwealth Table Tennis Championships and winning the silver in the women's event as well as the women's double event in that era. Well, the latest thing is the fact that she led the Indian women's to the gold medal win in the final against the 4-time gold medalist and defending champion Singapore at the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Australia. And now the man who has taken the reins of the Indian Olympic Association, Dr. Narendra Batra, and the dignitaries on the days receiving it, because the host city and their delegation are here from Indonesia, and they will be carrying on this torch relay in different parts of the Asian countries, and this is where the flame of the Asian Games, which I think Shivendra is eternally alit here at the National Stadium in New Delhi. और सुजय, इस समय जो एशियाई खेलों की ज्योति है उसे, चूंकि इसकी यात्रा इंडोनेशिया की है, सुसी सुशांति जो कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, बैडमिंटन की इंडोनेशिया से आती हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीता, जिन्होंने 1996 में अटलांटा में सिंगल्स का कांस्य पदक जीता, उबेर कप, सुधीरमन कप सभी में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी जब सुसी सुशांति टीम की सदस्य थी। इंडोनेशियाई टीम को एक महाशक्ति कहा जाता रहा है। वो इस समय फ्लेम को अपने हाथ में लिए हुए, और ये जो ज्योति है जो सुसी सुशांति इस समय अपने हाथों में लिए हुए हैं, ये इंडोनेशिया ले जाई जाएगी और इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर फिर टॉर्च रिले का आयोजन होगा। 2 दिनों के बाद इंडोनेशिया में ये ज्योति पहुंचेगी। मंच पर केंद्रीय खेल सचिव श्री राहुल भटनागर, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा, महासचिव श्री राजीव मेहता,
इंडोनेशिया एशियाई खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष एरिक थोहिर इस समय मौजूद हैं सुसी सुशांति के साथ। राजा रणधीर सिंह भारतीय ओलंपिक संघ और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से जुड़े हुए अपने ज़माने के मशहूर निशानेबाज भी रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है राजधानी दिल्ली के लिए। पारंपरिक तौर पर चूंकि 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था, तो एक परमानेंट फ्लेम है जो कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रज्वलित रहती है। इस समय सुसी सुशांति इस फ्लेम को अपने हाथों में लिए हुए सुनिश्चित किया जाएगा इंडोनेशिया से जो मेहमान पधारे हैं वो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। Good morning to everybody. OCA Honorary Life President Mr. V. Jeong, IOC Honorary Member and OCA Honorary Life Vice President Raja Randeep Singh Ji, Ambassador of Indonesia, His Excellency Mr. Siddharth Raja Surep Diporo, Chairman Indonesia Asian Games and Organizing Committee Mr. Eric Thohir. He is the President of NOC Indonesia also, Olympic gold medalist and torch relay ambassador from Indonesia, Mr. Susi Susanti, official from ANOSOC and OCA, Secretary of Sports, Government of India, Rahul Bhatnagar sir, Director General of SAI, Mrs. Neelam Kapoor, our dear elite athletes, my dear colleagues of IOA and national federations, friends and representatives of sports media, ladies and gentlemen. Every time the Asian Games torch relay begins from India, it is a special moment for Indian Olympic Association and my athletes. In the 1950s, India and our NOCs were the pioneers among Asian countries in sports. The Olympic Council of Asia and Indonesia Asian Games Organizing Committee respect the tradition and begins of Asian Games. And we have returned to New Delhi to lighting of the torch. I thank Olympic Council of Asia for keeping up the tradition for starting in the torch relay from India. And my special thanks to His Excellency Sheikh Al Sabah, the President of OCA. And all the OCA staff is here. I convey our sincere thanks to OCA on the Life President, Mr. V. Young, for joining us today and is joining here and he reached here in the late nights for torch relay. IOC Honorary Member, OCA Honorary Life Vice President and our former Secretary General Raja Randeep Singh Ji has been our strong supporter and administration in the sports is always with us. Thank you, sir, for your presence and encouragement. On behalf of IOA, I thank OCA and its entire staff for all the support in the coordination of the torch relay. A special thanks to Vinod Tiwari. He has done a good job for the torch relay. I express our sincere thanks to Indonesian Asian Games Organizing Committee, its chairman, Mr. Eric Thohir, the delegation members and the staff of INOSOC, who are our co-host of his torch lighting ceremony and relay. We thank you for sharing this historical moment with us. The Indian team is preparing well and it is looking forward to the games next month. I also convey our special thanks to Olympic medalist and Indonesian torch ambassador, Ms. Susi Suwanti, for attending this event. I would be failing in my duty if I don't thank the ambassador of Indonesia and Ambassador Mr. Siddharth Raja, who extend full support to us for Asian Games and his event, and is supporting to every athlete regarding the visa issue. I also thank Mr. Rahul Bhatnagar, Secretary of Sports and representative of the ministry who are present here for the torch relay. I don't want to say anything about the Rahul Bhatnagar. He is the man, whenever you call Mr. Bhatnagar in a day and night, he's pick up the phone and give the answer. So I am very thankful to Mr. Bhatnagar. I convey our thanks to all our Indian athletes, medalists who took time of their busy training schedule to be here today. On behalf of IOA, OCA and
in SOG, we convey special thanks to all the school children, army officials, athletes, officials, and sports persons who took part in today's events. Your presence made this torch relay a grand success. I also take the opportunity to thank the Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs, SAI, and Delhi Police, Doordarshan, SAI, especially Mrs. Neelam Kabur is here. I am thankful to Mrs. Madam. He has done a good job for this torch relay events. And the government department has cooperated in the organizing of this event. Last but not in the least, I thank member of the IOA, our federation, agencies and partners who their invaluable support. A special thanks to all the vice president here, joint secretary of IOA, executive members here. A special thanks to senior vice president and the Delhi Olympic Association. He has done a great job for this event. And Sudhanshu ji, Sunena, DK Singh, Omkar Singh, RK Anand, Namdev, Rakesh Gupta ji, Manmohan Jaiswal. So this is a nice event he has done, organized by IOS. This is 4 years from now. We will wait again to honor this tradition. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Mehta, sir. Dr. Batra would like to say a few words. I think I'll fail in my duty if I don't if I don't acknowledge. Well, the commencement has happened here in New Delhi. So that's why I'm saying single-handedly with his team led by Mr. Sacheti, who is down there. So a big round of applause. Zor se taaliyan bajaiye, please. This entire credit goes to him and his team. Thank you very much. Thank you, Dr. Batra, and thank you to the organizers as well. Thank you to the media for being here. Ladies and gentlemen, that brings us to an end as far as the proceedings here this morning are concerned. Well, the commencement has taken place right here in New Delhi, and this torch relay will be heading to Indonesia. And we will be traveling a total of 18,000 kilometers, the journey across 54 cities in 18 provinces across the archipelago to the opening ceremony in Jakarta on 18th August 2018. That's all we have from the Major Dhyan Chand National Stadium in New Delhi. It's hoping that everyone will join in the extravagant exuberance of the 18th Asian Games in Incheon, from Incheon now, which will be played in Indonesia. Thanks for tuning in. Goodbye and God bless.